How are you all? What is happening? What are you guys doing? Something is always happening. Yes. So, what are you guys doing? How is life? What all is new? So, today's session, as we know, is on a strategy. It's a strategy session in which we shall be discussing how can you score above 30 in legal reasoning. So generally legal reasoning comprises of 25% of the paper. Now since we are talking about CLAT, we are expecting minimum of 40 questions in this exam. So out of 40, if you're able to score above 30, you are in the safe zone. That means you have performed very well. Right. So what are the tips? How can you do that? How can you make sure that you're not attempting wrong questions or you're not getting wrong answers or your accuracy is good, right? Something that you need in order to get a good score, because legal reasoning is definitely one of the most important sections, the lengthiest of all, and determinative too. Like it is a tiebreaker. If you happen to clash with any other student, ये लीगल रीजनिंग का ही सेक्शन है जो उस टाई को ब्रेक करेगा, और तुम अगर आगे हो तो तुम्हें रैंक और सीट दोनों दिलवा देगा. Can I explain quantum merit? Of course I can. Of course I can. Sajjan, can you wait till the end of the session? I will explain it towards the end, right? So legal score is stuck at 25. Now, this is something that I have discussed a number of times. Uh, whenever there is a problem where you find yourself stuck at a particular number, there is something that you are doing over and over again. There's definitely a mistake you're repeating. ठीक है. अब सोचने वाली बात है, अगर आप एक ही गलती को बार बार करते हैं या एक ही प्रोसेस को करते रहते हैं तो उस प्रोसेस का रिजल्ट भी वही आएगा. तो अगर आप गलती को दोहरा रहे हैं तो गलती को दोहराने से या गलती को करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी स्टैग्नेंट ही हो जाएगा, राइट? तो आइडेंटिफाई करिए कि भाई आप गलती कर कर रहे हैं, वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स, व्हाई इज योर स्कोर रियली स्टक. You're definitely doing something wrong and you're repeating that wrong in every exam, in every mock. This is the reason why you're not able to score above 25. So Arzu, my suggestion for you is to try to identify what mistakes you're making. If you're talking about sectional test, if you're talking about mock test, in a mock 25 is not a bad score, but you definitely can do better. Try to understand why you are not able to get above 30. Are you attempting questions wrong or are you not attempting them at all? अगर आप बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है और लॉ की नॉलेज की कमी है. तो देखिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आप कमजोर हैं. ट्राई टू read that topic, try to take sessions on that topic. If you're attempting wrong questions, if the negative marking is affecting your score, try to figure out why you are attempting questions wrong. So there is one more announcement that I have to make, actually two. I'm sorry. So one is All India Mega Mock Challenge. Now, over and again in all my strategy sessions, I have emphasized बार बार कि भाई मॉक्स देने हैं, मॉक्स देने हैं. इन मॉक्स का जो रिजल्ट होता है वो काफी कुछ तुम्हें मदद करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि तुम्हारी तैयारी किस लेवल पे है, तुम कितने पानी में हो. These mocks are definitely not going to decide what you're going to score in your actual exam, but they will help you increase your score. That is their role. तो obviously अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसा कोई मैकेनिज्म मिल रहा है जिससे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं तो उस मैकेनिज्म को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है. और इस तरह के ऑल इंडिया टेस्ट जो होते हैं वहां पे, क्योंकि ये टेस्ट जो है क्लैट, इट इज ऑल्सो एन ऑल इंडिया टेस्ट, राइट? तो ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू सिट इन अ competition which is all India level, you need to have practice sessions which are also all India. बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहाँ पे फ्री में आपको इस तरह के मेगा मॉक चैलेंजेस मिल जाते हैं जहाँ पे यू आर competing with strangers who are also going to be your competitive peers in the exam. सो ट्राई टू फिगर आउट कि भाई तुम एक्चुअल एग्जाम में इतने सारे बच्चों के बीच में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और वहां से तुम्हें एक्चुअली समझ आएगी कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हैं. एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम के प्रेशर में जहाँ पे इतने सारे बच्चों के साथ तुम्हारा कंपटीशन है, तुम घबरा रहे हो, फोकस की कमी है, कंसेप्ट की कमी है, किस चीज की कमी है वो तुम्हें तब समझ आएगा. इसलिए एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस सेशन, माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर योर बेनिफिट
ये तुम्हारी बेहतरी और तुम्हारी भलाई के लिए है। जो सारे बच्चे अपने क्लैट को लेकर सीरियस हैं वो इस मेगा मॉक को ज़रूर देंगे। सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर सितंबर 23 और अक्टूबर 2 को है ये, 10 बजे और 11:55। ये एक रियल क्लैट एक्सपीरियंस है। It will be created by an expert team who has analyzed consortium since the consortium was established. जब से कंसोर्शियम बना, जब से क्लैट आया, तब से उस पैटर्न को एग्जामिन करके क्या पैटर्न रहता है, किस लॉ पे फोकस करते हैं, क्या आ सकता है, करंट का एक पूरा अच्छे से ब्यूरो लेके कि भाई कौन सा करंट रेलेवेंट है, हर चीज़ को समझा के समझ के एक मॉक आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक एक्चुअल मॉक फीलिंग आपको देगा, एक्चुअल क्लैट फीलिंग आपको देगा। वो सारे बच्चे जो आपके साथ एक्चुअली क्लैट में बैठेंगे वो यहाँ पे भी होंगे। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, मॉक देना है। ठीक है, ये पहला अनाउंसमेंट था। दूसरा, आई हैव अ हॉर्स और अ कोर्स थ्रोट एंड अ कोर्स वॉइस, so there might be situations where I would be coughing a lot in between. Pardon my interruptions, but this is something that I cannot help. तो अगर मुझे बीच में खांसी आ जाए या मैं बीच में रुक जाऊं तो तुम लोग ये मत सोचना कि मैम आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आई विल गैदर माई सेल्फ एंड मूव ऑन, राइट। Your highest score in legal is 33.75 and your highest mock score is 108.25. It's a very good score. It's a very, very good score. So try to, if you think you can improve, there's always a, there's always a scope of improvement. You are doing very well. If you're getting this much, you are definitely doing a good job. So I would suggest that you keep on practicing, continue this practice. Even if it goes down in 1 or 2 marks, that's okay. Don't, you know, belittle yourself or don't get discouraged. It's okay. Once in a while, this is how things go. One time you can get a very high score, one time you may get a not so high score. So it would happen. But as long as you can reach this height, you definitely are going to do great in your exam. So keep practicing, right? Now, the objective of this session is to understand why legal reasoning is important, what is exactly legal reasoning, the strategy and the tips that can help you maximize your score, and the important sources from where you can prepare and revise. And we shall also do a few practice questions, right? So legal reasoning is one of the most crucial sections. Everybody knows it, right? Legal reasoning contains different kinds of questions. Every question is passage based. So everybody now understands the pattern of CLAT and other exams. So there is no point pondering over it, right? So it is a tiebreaker section for those of you who are not familiar with this. If you happen to tie with any person securing the same number of marks in the same rank as you have, they will try to identify who got a better score in legal reasoning. So the one who got a better score in legal reasoning will be given preference, right? And the person who got less marks will be out from the race. So it is a tiebreaker section because obviously it's a law entrance exam. That is the section they're going to emphasize upon the most, right? It's a component that previously they used to test on a candidate's knowledge, like how well can he prepare law, how well can he understand murder and culpable homicide, does he really understand the meaning of abduction, does he understand what extortion, kidnapping, abduction, etc. is. So that's exactly what used to happen before 2020. But after 2020, they focused more on, how focused or attentive a child is. Because that's what is required for a person to be in a legal fraternity. If you are in a legal fraternity, if you're going to become a judge or a lawyer or anything similar, you need to be extremely focused and attentive because you are handling somebody's rights, and your management or your skill can determine somebody's entire life, right? So you cannot be disheveled or unfocused or
what should I say, you cannot have have a less attention span or something like that. You cannot have an attention deficit. You need to be extremely focused because you need to understand what exactly is happening in the case. Okay, so are you guys talking in yourself? Should I give you guys a break? Should I stop speaking? I mean, I can answer all the questions, guys. It's not like that I won't answer your questions. I would definitely answer all the questions. The only thing that I demand is to wait for some time. Okay, when I ask you, ask me if there is a problem, then you can. Right? So there's a particular reason why we have assembled here, and I'm trying to tell you something. It will be helpful for you. You know that I never tell you anything which is irrelevant. So why don't we focus on the session right now for at least 10-15 minutes, right? Just 10-15 minutes into the session. I'll take a break, and then whatever problems you have, we can discuss them along with the fact along with the discussions that you want to have amongst themselves. Right, so let's focus on the session for 10 to 15 minutes. After that, we'll decide a different course. If you don't want to continue the session, we can do that also. We can do something else. But let's do what we came here to do, right? So yes, now I was telling you that it is after all a national university exam that you are sitting for, guys. So your interest in law, the aptitude that you have for law, how focused can you be while reading and understanding, comprehending, deciphering law will determine how much you're going to get in your exam. Right? So legal knowledge or the interest in law is actually important, because if you can understand law right now, even at this stage when you're a child just fresh out of school or maybe in school, it is very likely that you will continue the same interest and same inclination towards your subjects when you're doing graduation, and it'll be very helpful. The more interested and the more focused a child or a student is who is doing law, he is more likely to grasp the concept of it, because law is not just theory. Law is basically a living, breathing document. It tells you something each time you read it. I have, I did my graduation so long ago. I did my masters after it. I'm pursuing my PhD right now. I have to read sections over and over again. There are so many times I have to read the sections, provisions of law. I'll tell you one thing, whenever I read the provision, I always find something new. Always, there's always a conjunction or a preposition that adds to the meaning that I already know. मुझे मीनिंग पता है, मुझे बेसिक फिलॉसफी और थ्योरी पता है जो प्रोविजन की निकल कर आ रही है, लेकिन जब भी मैं उसे पढ़ती हूँ कुछ कंजंक्शन, कोई ऐसा प्रेपोजिशन, कोई ऐसा एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है बीच में जो उसकी मीनिंग में एक और एडिशन ले आता है, और मुझे पता चलता है अरे ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया. तो दैट्स हाउ लॉ इज, राइट. तो इस चीज को करने के लिए आपको फोकस चाहिए, और यही फोकस क्लैट भी आपसे डिमांड करता है, और इसीलिए पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया गया है, राइट. It is not to make anything complicated. It is only to churn out the best among a very huge lot, right? So the legal awareness, your analytical skill, the ability to solve problems take you a long way. Now, what exactly is legal reasoning? Everybody knows it. We don't have to go into the nitty-gritty of what exactly is legal reasoning, questions related to law. So there will be a passage, and based on that passage there would be questions. So you might be asked to understand or decipher the tone of the passage and then answer accordingly, or there might be a direct question relating to the passage. You have done enough mocks and sectional tests to understand what kind of questions you face, right? Legal reasoning, why is it important? Everybody knows it. It gives you a skill that you require as a lawyer. Thinking like a lawyer is an art. Trust me, it is an art. So how well can you think like a lawyer when you're thinking or when you're reading law? How good can your focus be? How concentrated can you be? Can you really focus on one single provision that is going to change a person's entire life? Can you understand, interpret it according to your convenience, your client's convenience? Everything like this requires great focus, right? So that is what legal reasoning would make you do it. And this skill is not just important for this particular section.
It works in all the sections, not just this. So it overall will develop or give you a basic skill, a basic competitive or a life hack that will take you a long way. Okay. So why, when you're tackling a problem or when you're faced with a legal problem, the first thing that you need to do is to read the passage with an open mind. You definitely know law. I have taught you law enough to understand or to derive what is written in the passage even before reading it. But that knowledge of law is given to you only to understand and read the passage quickly. That is the only job of your legal knowledge. You are not to apply that knowledge while solving questions. You are not to apply that knowledge to contradict the author. No. The agenda of the exam or the pattern of the exam ultimately wants you to answer according to the passage, which means that you have to stick to the passage. Whatever is written in the passage will be asked in the questions, और आपको जवाब पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है. Right? So you cannot compare notes, you cannot compare information, you cannot compare what legal knowledge you have with that of the author. ऑथर ये कह रहा है पर एक्चुअली तो प्रोविजन ये कहता है, तो ऑब्वियसली आंसर तो ये होगा जो मुझे पता है. तुम्हारा आंसर लॉजिकली बिल्कुल सही होगा, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा और तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको लॉयर की तरह नहीं पढ़ना, आपको आर्ग्यू नहीं करना, आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है. उस पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पहले से पता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उस पैसेज को बहुत कम टाइम में पढ़ लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा उसे डिसाइफर करने के लिए. और इसीलिए लीगल नॉलेज ज़रूरी है. यही है लीगल नॉलेज का रोल, और कोई रोल नहीं है. ठीक है. आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट. इट इज़ नॉट टू मेक यू अ लॉयर ओवरनाइट. Whatever law I'm giving to you will not make you a lawyer, trust me. It will make you a good researcher, it will give you a lot of knowledge, but ये knowledge तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई नहीं करनी है. ये तुम बाद में अप्लाई करना, जब तुम लॉ करने लगो, जब तुम पीसीएस जे के एग्जाम्स हो, तब आएगी ये काम. जब तुम आंसर्स लिखोगे, एग्जाम्स दोगे, तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, तब तुम्हें याद आएगा निवेदिता मैम ने पढ़ा रखा है. She has already taught me this, I know this concept by heart. Then you'll thank me for what I have taught you. But right now, while solving the questions in CLAT, in mocks, sectional test, the only knowledge, the only use of the knowledge that I'm giving you is to read the passage quickly in lesser time. That's it. Promise me you're going to do that. इसके अलावा तुम अपनी लीगल नॉलेज को क्लैट में कैसे भी यूज नहीं करोगे. ठीक है. अच्छा चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. लेट्स डिस्कस योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. दिस इज आफ्टर ऑल अ जेनेरिक सेशन. Yes, guys. So I had questions coming from students. What is it that you wanted to ask me? Somebody asked me if you have just started. अभी शुरू किए हैं तो कैसे करना है? 3 folks. Do you have a name, buddy? Are you a girl, boy? Or are you still here? Did you leave the session? You're still here? Yes, so let's discuss questions. You're a boy. Okay, what's your name? I cannot call you 3 folks. Especially in questions, you cannot use your legal knowledge, Aram. Suraj. Beautiful name. Okay, Suraj, if you are just starting now, I won't discourage you, but I would tell you कि तुम्हारी मेहनत अब डबल हो गई है. ऐसा नहीं है कि तुम एग्जाम नहीं निकाल सकते बच्चे, निकल तो सकता ही है. मैं रैंक की और स्कोर की गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि ये तुम्हारे स्किल पर डेवलप करता है, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो. तो अगर मेहनत अच्छे से कर सकते हो लगातार, मतलब बिल्कुल एकजुट होकर, एकदम दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस को जीरो करके, तो क्लैट तुम्हारा बहुत अच्छे मार्क्स से निकल आएगा. अगर कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत भी कर लोगे तो क्लैट निकल आएगा. कितने अच्छे मार्क्स आएंगे ये कहना मुश्किल है. अब इतने कम टाइम में प्रिपेयर करने का क्या तरीका है कि हम सारे फैकल्टीज़ ने आपको एक बेयर मिनिमम सिलेबस बता रखा है. मैंने लीगल नॉलेज में आपको एक बेयर मिनिमम सिलेबस बता रखा है बहुत सारे सेशंस में कि लीगल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल एंड के टाइम पे आपको कौन कौन से कंसेप्ट पे ध्यान देना है. कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और क्राइम. ठीक है. इन 4 लॉज के अलावा तुम्हें और कुछ पढ़ना नहीं है. बाकी जो मिसलेनियस आएंगे वो तुम अपने, जो तुमने अनसीन पैसेजेस किए हैं ना बचपन से लेकर अभी तक 12th तक, उसकी स्किल को
यूज करके उन अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करना। बाकी के जो 5 पैसेजेस आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल से ही आएंगे। 2 न्यूज़पेपर से आ सकते हैं, एक शायद फैमिली से या कहीं और से आ सकता है। बहुत ही इजी होते हैं ये मिसलेनियस के पैसेज, इनको यूं ही सॉल्व किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस उनको पढ़ो। टॉर्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस उन्हें पढ़ो। क्राइम में भी यही करो और कॉन्ट्रैक्ट में भी यही करो। उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, उन्हीं पर फोकस करो, उनके फटाफट से नोट्स बना लो। थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 5 दिन लग के बैठोगे तो सिलेबस पूरा कर लोगे। नोट्स बना के बार बार पढ़ो उन्हें। सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस मैनुअल्स, यूनिवर्सल ले लो, एपी भारद्वाज ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और क्रिमिनल पे जितने क्वेश्चंस मिलते हैं सबको सॉल्व कर डालो। अगर इससे ऊपर मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन मिलता है तो पैसेज पे रिलाई करो, उसे नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। ये हो गया तुम्हारा लीगल को प्रिपेयर करने का तरीका। न्यूज़पेपर अब तो पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि न्यूज़पेपर फिर पढ़ना शुरू कर दो। अब न्यूज़पेपर से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और 3 महीने में कुछ रीडिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर के साथ एक दो कंपेंडियम उठा लो, एक प्रतियोगिता दर्पण का उठा लो, एक और कोई उतना ही कम्प्रिहेंसिव उठा लो। उन कंपेंडियम्स को तुम्हें एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना है लगातार। जो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर जो सेशंस वगैरह लाती रहती हूँ उनको करिए। लॉजिक में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझ के रोज प्रैक्टिस करो। जनरली बच्चे अगर 2 या 3 सब्जेक्ट रोज करें तो भी काम हो जाता है, बट क्योंकि अभी तुम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो तुम्हें हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा रोज करना पड़ेगा, तब जाके क्लैट निकालना पॉसिबल होगा। ठीक है, आई होप आई हेल्प्ड यू। Okay. How to complete legal syllabus in 3 months? Legal syllabus can be completed in a week if you act smartly. Kumkum. So like I said, मैंने बता दिया कि आपको कुछ important topics हैं वही करने हैं। उन्हीं टॉपिक्स को करना है और उतना ही करना है जितना मैंने और सुरजीत सर ने बताया, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। उसके नोट्स बना लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर किसी और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उस लॉ के कंसेप्ट को पढ़ने की, उस पर रिसर्च करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको वहीं रहने दो, उसे अनसीन पैसेज की तरह सॉल्व करो, क्वेश्चन निकालो, ठीक होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो अंडरस्टैंड करो या फिगर आउट करने की कोशिश करो कि गलत क्यों हो गया, तुमने क्या पढ़ा और आंसर क्या था, तुम्हें समझ क्यों नहीं आया, 1-2 बार और पढ़ लो। यहाँ पे तुम्हारा सेक्शनल टेस्ट और मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। प्रिपरेशन के साथ भी तुम्हें यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एटलीस्ट 2 to 3 मॉक्स एवरी वीक। That is how you're going to cover everything. 12 hours per day is a lot. I would suggest that you set achievable goals. एक ऐसा गोल सेट कर लेना या कुछ ऐसा गोल वो कर लेना, डिसाइड कर लेना जो कि अचीवेबल ही नहीं है, ये गलत हो जाता है। तो एक ऐसा गोल लेकर आओ जिसे तुम अचीव कर सको। थोड़े थोड़े का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल बूंद भरी पढ़ोगे, नहीं, कुछ चंक्स डिवाइड कर लो। मुझे 5 से 6 घंटा भी अगर आप देते हैं लीगल रीजनिंग को, सॉरी क्लैट को, लगातार क्लैट के दिन तक अभी से ही, तो भी अच्छा चांस है क्लैट के क्वालिफाई होने का। लेकिन फिर वो 5 से 6 घंटा आपको सिर्फ क्लैट को ही देना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नॉट ओके इरम, आई थिंक यू नीड रिविजन। इफ यू थिंक यू नीड रिविजन देन यू डेफिनेटली नीड रिविजन। जैसे ही आपको लगता है कि आपको रिविजन की जरूरत है तो आपको रिविजन की जरूरत है। ठीक है, तो शुरू कर दीजिए रिविजन। अच्छा, ओके। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स: essentials of contract, void, voidable and unenforceable illegal agreements, types of contracts, और बस इतना ही। ठीक है, शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट की, असेंशियल्स में भी काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं। हाउ डज एन अग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉट अग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है, बाय लॉ, लॉ ने उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, उनकी भी एक कैटेगरी है। बस इतना। कुछ काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, इनको पढ़ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इससे ज्यादा कि हालांकि कुछ कंसेप्ट है लेकिन फिर वो मॉक्स करते करते क्लियर हो जाएंगे, मॉक्स करोगे पढ़ोगे पैसेजेस को तो वही क्लियर हो जाएंगे. Where to solve sectional tests? Prashant, I think there are several available on BYJU'S portal. So you can uh, access the portal and solve the questions. I'm telling you, I'm saying this, I have said this a number of times, I'll say this again. You do not need to remember a single section or article for CLAT or any other law entrance exam. एक भी सेक्शन नहीं याद रखना है और एक भी आर्टिकल नहीं याद रखना है. फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स तुम अपनी जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हो सकता है MHCET में एक आध क्वेश्चन आ जाए पर वो भी बहुत अनलाइकली है. फंडामेंटल राइट्स मतलब 12 से लेकर 32 तक बहुत इजीली याद हो जाते हैं, बहुत इजीली याद हो जाते हैं, यूं ही याद हो जाते हैं. उनको दो एक बार पढ़ लोगे, उनसे रिलेटेड सेशन अटेंड कर लोगे, याद हो जाएंगे बस. इससे ज्यादा कोई सेक्शन नहीं, इससे ज्यादा कोई आर्टिकल नहीं, यू आर डन. दैट्स ऑल यू नीड फॉर क्लैट, राइट? Okay, contracts questions get wrong frequently. Then your concepts are weak, Iram. Arzu, if 20 mocks are also good number of mocks, have you completed them all? Have you completed them? Like, have you done them all? Prashant, it is very difficult to answer this question. Every child, every student has his own RPM, reading per minutes, okay, or words per minute. So इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है. आप डिवाइड कर लीजिए, यू कैन नॉट टेक टू मच टाइम, राइट? सो इफ यू आर टेकिंग मोर देन 30 मिनट्स इन लीगल रीजनिंग, यू आर टेकिंग वे टू मच टाइम. दैट्स हाउ यू शुड डिसाइड. आई थिंक जीके 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए. भले ही उसमें 39 क्वेश्चन है लेकिन जीके में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. येस और नो सेक्शन है, आपको या तो क्वेश्चन आता है, आंसर आता है या नहीं आता है. तो आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो, क्योंकि फिर तुम ऐसा भी नहीं कि तुम्हें याद आ जाएगा. याद आ जाए तो बाद में कर देना, लेकिन 10 से 15 मिनट्स जीके पे नहीं लगने चाहिए. उसी तरह से लीगल में 30 से ज़्यादा मिनट्स नहीं लगने चाहिए. डिपेंडिंग ऑन आपके फैकल्टीज आपको बाकी सेक्शंस में क्या बताते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कि पर पैसेज कितना टाइम आप दे सकते हैं. यू आर अ 24 एस्पायरेंट, शुड यू गिव मॉक? वाई नॉट, वाई नॉट, दे दो. ठीक है, बट ये याद रखो कि अभी प्रिपरेशन हाफ बेक्ड है, शुरू की है. ठीक है ना, अभी प्रिपरेशन शुरू की है तो बहुत बहुत मतलब इट इज देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट नॉट बी एबल टू स्कोर एज मच. बहुत कमाल का स्कोर आ जाएगा ये नहीं जरूरी. तो उस स्कोर से डिस्करेज नहीं होना है. अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है. एक बार भी खुद को क्वेश्चन नहीं करना है मेरे कम नंबर क्यों आ रहे हैं. तो अगर ये कर सकते हो तो अभी मॉक दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है शुभम, आई हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स. यू आर इन ऑलमोस्ट एवरी सेशन, फिर भी तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे हो. Here, I'll tell you still. Fundamental rights, basic structure, preamble, fundamental duties. These are important topics in Constitution. Apart from this, 11th, 12th class CBSE, NCERT, political science. This is your Constitution ka syllabus. That's it. Nothing else, nothing more. In fact, if you do basic structure and fundamental rights, that's also done. मतलब that's also enough. उसमें से भी मैक्सिमम कवर हो जाएगा. लेकिन हाँ 11th-12th क्लास की पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की, वो जरूर पढ़ लेना. स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं उससे, और रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. योगेश, अगर इतना रिवीजन हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन को रोके मत. रिवीजन आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक चलता रहना चाहिए. in Hindu law, family law, Hindu, Muslim, marriage, divorce is enough, more than enough, more than enough. You don't have to study family law. I don't advise my students to study family law. एक पैसेज आता है उसमें से, बहुत सिंपल, वो भी पता नहीं आएगा कि नहीं. देखो कुछ पैसेजेस को तुम अनसीन पैसेज का जो तरीका होता है ना, पैसेज पढ़ा क्वेश्चन सॉल्व किया. I mean, your exams in Hindi and English both, you used to have, and you have solved a question related to unseen passage, apatit gadyansh, both in poem and text, right? Prose and what is the other thing? Poem.
Okay, so you have solved them every year in 3 terms. So it is not that you don't know how to solve or attack an unseen passage. You have been doing it since you were very little. So passages that are not related to contract, constitution, tort and crime will be dealt with in this manner, just like any other unseen passage. Right? Constitution, contract, criminal torts are core law. They require a legal understanding. They might take you some time to understand. In remaining 3 passage, you can take a chance. Also, when you are done with these core legal topics like constitution, tort, crime, contract, the rest of the law becomes very easy because constitution is the law of the land. It is the mainstream from which everything else is flowing. So as far you understand or you get the hang of the law of the land, you can understand everything else. It's not that difficult. Family law will only comprise of elements and definitions. They will give you elements of what is going to happen when all the elements fulfill. What are the elements that will constitute of something? Just underline the elements, underline the ingredients, solve the questions according to that. There will be only few, 2, 3, 4 lines in that passage would be which would be relevant. Focus on those lines, underline those lines, solve the questions. All 5 questions can be solved by this trick when you face a question relating to family law. Okay, there will be nothing else. Should I start 12th legal book for torts and contract? Of course, why not? Contract enforceable when acceptance come in the knowledge of offerer. If offerer accept offer through phone call due to some could not hear the acceptance, then is it valid or not? Contract, you mean agreement is enforceable, no? Contract means agreement. So telling me agreement becomes offer. Sorry, agreement becomes contract when the acceptance comes in the knowledge of offerer. Right, okay, that's true. So if offerer accepts offer through phone call, मुझे समझ नहीं आया, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि एक आदमी ने ऑफर किया सामने वाले को, अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, बात सही है। ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो अग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसका एक्सेप्टेंस ऑफरर तक नहीं पहुंचा क्योंकि फोन लाइन में दिक्कत थी, तो भी अग्रीमेंट होगा? हाँ, इसका जवाब है हाँ। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। The agreement is valid and it is completely enforceable as long as the other elements are fulfilling, even if he has not heard the acceptance properly. Okay, that's what Indian Contract Act says. Should we move on? Yes. So this is the pattern, guys. These are the number of passages, right? No, it's not. Even if he doesn't hear it clearly, it is still valid. Indian Contract Act does not really leave room for a person after he has accepted the offer. एक बार accept हो जाता है ना offer, मतलब एक बार उसने हाँ बोल दिया उसने, ठीक है, तो अब हाँ उसने you're 20, should you go for it? थोड़ा सा लेट हो गया है। थोड़ा सा लेट हो गया है। द ओनली थिंग इज कि एक्सेप्टेंस उसने मन में नहीं रखी है, मतलब उसने मन में एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा ऑफर है, मैं हाँ बोल दूंगा। जब तक ये नहीं है, जब तक उसने बोल दिया है, चिट्ठी लिख दिया है, मुंह से बोल दिया है, किसी तरह से उसने सिग्निफाई कर दिया, तो वो एक्सेप्टेंस है। ठीक है, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले का केस तुम्हें याद होगा, तो उसमें जो जो नेफ्यू था अंकल फेल्ट हाउस का, उसने उसने एक्सेप्टेंस तो किया था लेकिन उसने किसी भी तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब अंकल तक ये बात पहुंचने की कोशिश भी नहीं की गई, पहुंचाने की कि अंकल ठीक है मैं आपको हॉट सेल कर दूंगा, आपका प्राइस मुझे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो उसने मनी में रख ली बात, हाँ ठीक है अंकल कह रहे थे मैं बेच दूंगा। राइट, तो हाउ डू यू नो इट इज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द ऑफरर? फोन लाइन में डिस्टर्बेंस है बाद में देखो, हाइपोथेसिस को अगर तुम्हें करना है क्लियर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है या लॉ जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस को लेकर चलता है।
ठीक है, इमेजिन करो एक सिचुएशन को जहां पे उसने कहा हाँ भैया आवाज आ रही है, तुम्हें ऑफर एक्सेप्टेड है। वो कहता है हाँ हाँ मुझे ऑफर एक्सेप्टेड है, हाँ आवाज आ रही है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा बाद में बात करता हूँ, आवाज यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत है, फोन रख दी। उसने कुछ सुना नहीं, पर उसे पता है कुछ तो बात हो रही थी। तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लॉ ये लेकर चलेगा कि बाद में ये लोग चीज क्लियर कर देंगे, बाद में ये जो कम्युनिकेशन है ये क्लियर हो जाएगा। नॉइज इंटरप्शन परमानेंट नहीं रहेगा, इनफाइनाइट नहीं रहेगा। इस क्वेरी को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर एक आदमी एक्सेप्ट करना चाहता था ऑफर, उस टाइम पे वो उसने हाँ बोल भी दिया, उस समय नॉइज थी, तो वो बाद में क्लियर कर लेगा कि सुनो आवाज उस समय ठीक से नहीं आ रही थी, मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्टेड है। तो हम एक सिर्फ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को प्रेजेंट में नहीं लेकर चलते, आगे तक सोच के चलते हैं जब भी लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है। तो अब तुम अपनी हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा डाइव कर रहे हो डीप में, तो इस चीज को भी लेकर चलो। उसने हाँ बोल दिया, नॉइस थी, उसने चिट्ठी पहुंचा दी, चिट्ठी नहीं पहुंची, उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस हो चुका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मानता है कि अग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। इतना टफ है, ठीक है। that's how you lose mark, yes, that's how you lose marks, बिकॉज तुम अंदाजा लगा लोगे कि नहीं आवाज तो पहुंची नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं बनना ही। बहुत ही सिंपल सा पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट if I if I have communicated my acceptance, Indian Contract Act does not make it mandatory that the communication of acceptance should reach the offerer for some reason। ठीक है, उसने कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का आगे बढ़ा दिया, अग्रीमेंट हो गया, अब वो पीछे नहीं हट सकता, वो पीछे नहीं हट सकता। मतलब उसने एक बार हाँ कह दिया तो वो बाद में ना नहीं बोलेगा यार मुझे इससे बड़ा घर कम पैसों में मिल रहा है, राइट। सो that's what happens. So whether or not it reaches the offerer is not really a mandatory requirement for an agreement to become a contract. Why have they not included it is something not beyond my comprehension, I understand it। लेकिन ये चीज तुम समझ जाओगे, जैसे जैसे तुम लॉ पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तुम समझ जाओगे कि इसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं किया है, राइट। So sometimes later becomes never, do it now. This is the quote of the day. You need to start preparing right now. So students who are actually serious about taking CLAT, thinking about really, you need me to take a session on contract law. Didn't Surajit sir take a session on contract law? And I think he explained everything. Do you want me to take what is colorable law? At the end of the session, we'll discuss everything. Okay. So these are the analytics, 5%. These are the major laws that you need to understand, major topics. I don't really recommend you to go for these topics if you don't have much time. There's no point, right? So don't go for these. I would only suggest you to focus on this box. Okay. Yeah. Minor topics. These are the minor topics. Since you don't have time, you cannot focus on the minor topics, right? These are the past year 10 trends. As you can see, constitution, contract, crime, tort, and these four are in the major focus. Like these are the passages on which major questions are asked from. These are the major topics or major laws. So if you focus majorly on them and rest you treat every other passage like a normal unseen passage, you can actually get through. So there would be 15 questions which would not be from the above. And there's only a chance, there might be a chance that all 8 passages come from these core topics only. None of the passage come from outside or from any other source. So you have to take that chance. You have to go with the majority, not with the, right? The cost efficient benefit is really less. So don't do that. Right. So this is the past year trend. You need to like, comment our section. The session is not over. So everybody who is watching the session, please like it already if you haven't. Right? Good. Yes, one can do. Exactly. Listen to Rashmi. Miscellaneous is a very easy. One can do them by themselves. You don't need additional knowledge for it. Now, how to maximize the score? First thing first, start reading newspapers. Reading is important. Guys, reading is very important. It is something that you cannot take for granted.
So when I say reading is important, I mean reading is important. So read whatever you get your hands on. 11th, 12th class Indian political science, contract taught, whatever it is there in your school syllabus, read it. Newspapers, try to make a habit of reading a newspaper. Even if you're reading a partial side of it, even if you're reading the most important or the most interesting or the understanding parts of it, that's okay. As long as you're reading, you're good, right? Important judgments, I won't suggest you to read them unless I have suggested you or I have asked you to read them. Important judgments are basically given in comprehensive, exhausting, exhausting websites which give the entire case study like from top to bottom. It makes those cases extremely difficult. So don't read them. ठीक है, पता चला इंडियन कानून खोला और केशवानंद भारती पढ़ने लगे, तो ऐसा मत करने लगना। जब तक मैंने तुमसे नहीं कहा है किसी जजमेंट को पढ़ने के लिए, तब तक उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जजमेंट्स जो रीसेंट हैं वो आई टेक केयर ऑफ द जजमेंट्स दैट आर एक्सट्रीमली रीसेंट, लाइक जस्ट हैपनिंग yesterday or day before yesterday, on these sessions, on YouTube sessions. They're available free of cost. Watch them. I give you a lot of knowledge relating to laws, core laws, criminal, contract, constitution, whatever it is that they refer to. तो उससे बहुत बहुत सारी जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। वो सेशंस ज़रूर अटेंड करिए। एडिटोरियल पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है। एडिटोरियल से रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, ऑथर का टोन समझ आ जाता है और एक्चुअली आप पढ़ना सीख जाते हैं, राइट? तो एक पैसेज को किस तरह से टैकल करना है, हाउ आर यू सपोज टू इवन हैंडल अ पैसेज, if an author is trying to tell you something, do you even understand it? So that understanding that thing that you need to do while reading a passage, that comes from the practice of reading. And editorial is the best practice. It gives you a lot of words first, synonyms and antonyms, different complicated words, right? So you always get confused in the meaning. What does this word mean? So you can always try to figure it out. While you are Googling a certain word, you might locate two more words. It will help you in your vocabulary, which will in turn help you solidify your reading skill, right? See, editorial session is a section where you can find an unbiased or even a biased opinion. It is still an opinion. If you can understand the opinion, it is very likely that you will understand the passages also. So whatever it relates to, social, judicial, political, any opinion that the author is trying to give you, if it is neutral, very well, it's the best thing that can happen to you. Even if it is biased, then also it's okay, you can read it. If you're not agreeing with the opinion, then don't read it, okay? Opinion do create a certain mentality which is not good. Which topic you should cover in miscellaneous law? I am asking you not to cover anything in miscellaneous law, trust me. You cannot cover miscellaneous law, it is vast. You cannot cover anything in miscellaneous. So law is not this much. Just like GK, general knowledge, current affairs, it is not exhaustive. It is ये तो बड़ी देर बाद आई, बहुत बहुत ज्यादा है, नहीं कर पाओगे। कोर पे रहो सॉरी, कोर पे रहो, स्टिक टू द कोर। कुमकुम, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, फैमिली, सॉरी, torts. The miscellaneous topics that you're talking about, they can be practiced through passages itself. So whenever if you have taken a book, Universal AP Bharadwaj, you would find passages which are not from these core legal topics, constitution, etc. So miscellaneous can be covered through that. If I am taking any miscellaneous session, attend that. That should be enough. Okay, don't overexert yourself with unnecessary information that you cannot concise. Okay, yep. यूट्यूब पर पूरा क्लास नहीं मिल रहा है लीगल का। यूट्यूब पे पूरा क्लास होता भी नहीं है लीगल का, देर इन स्क्रैप्स एंड पार्ट्स। सो what exactly are you looking for? You can, okay, so I have told you legal syllabus a lot of times. Can you go over to my other sessions? I have discussed it a lot of times. अभी भी, इससे पहले भी डिस्कस किया था, आप लेट हो गए। इसको रिवाइंड कर लो, इसी में बता दिया मैंने कुछ कुछ। तो
Improving reading comprehension in a month is possible. Of course, keep doing it. Read at least 5 to 6 passages every day. Look at your performance level at the end of the month. You will be amazed. That's how good you'll become. But it should be at least 5 to 6 passages every day. Frequency बढ़ा दो passages की 7 to 8 कर दो. ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम में तो तुम्हें बहुत सारे पैसेजेस करने हैं. 8 तो लीगल से ही होते हैं, राइट? So improve your frequency, do at least 5 to 10 passages every day. At the end of 30 days, you will become great. I promise. CLAT और ALET के लिए कौन सी बुक लें? I think you can go for Universal, right? And ALET, I'm not sure. Any book that has maximum number of questions is okay. फर्स्ट सैंपल सेट एक्चुअली आज आना चाहिए था. 17 सितंबर से 23 तक का विंडो है, कभी भी आ सकता है, आने वाला होगा. ओके. इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ऑल लीगल मैक्सिम्स? नो नित्या, प्लीज डोंट डू दैट. Please don't do that. See, everybody is telling you not to do that. You won't be able to. You won't be able to. You cannot imagine the number of maxims that are available in Latin. हीरो किलर, मैं एक्चुअली लीगल का पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चे, और वो किसी सेशन में मैंने किया. आई थिंक इससे पहले का ही सेशन मैंने लिया था. इट्स अ लॉन्ग सेशन, एन आवर एंड अ हाफ. उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि कौन से टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो कौन से लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिन पे आप फोकस कर सकते हो. तो तुम देख लो उसको एक बार, उससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगा, उससे तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा अच्छे से, राइट? यूनिवर्सल में पैसेज के साथ ही लीगल, मतलब प्रैक्टिस करो. अभी प्रैक्टिस तो करना शुरू करो. ये सवाल तो तब आने चाहिए जब तुमने कुछ करना शुरू किया. मेरी क्लासेस पूरे हैं बच्चे, कैसी बातें. How many maxims do you need to do? See, maxims se there can only be one question maximum. In CLAT, since a long time they haven't asked a single maxim. Maxim may be asked in more conventional exams like MHCT or QCET. They're not focusing on maxims anymore in ALET and CLAT both. But if you still want to focus on maxims, I have taken about 2-3 sessions. The 30-35 maxims I've done. Watch them, they're more than enough. While you're reading passages, while you're practicing, you will figure out you will face few legal words, maxims here and there. Try to understand the meaning, and that's all you need to do. Right, so we were discussing strategy. So you need to read the editorial. That is the first strategy, because you need to practice your reading. Okay, so it will build your opinion. All that stuff is not really necessary. All I want you to do is read. So read editorial, read newspapers, develop your reading habit, because legal requires you to read a lot. In CLAT and ALET both. ALET they have also decided to incline themselves, or to become more like CLAT consortium. That is the reason why they made their questions so lengthy. अगर आपने देखा हो पुराना क्वेश्चन पेपर 22 का, तो क्वेश्चंस वर लेंदी, अच्छे खासे लेंदी थे. वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होने के बाद भी वो लेंदी थे. उन्होंने भी रीडिंग इनकलकेट कर दी अपने पेपर में. तो भाई रीडिंग तो तुम्हारा, इट्स अ ब्रह्मास्त्र गाइस, ट्रस्ट मी. Okay, it's your major weapon. So read. Jamia is amazing, Ashi. It's amazing. One of the best colleges in India. But the problem with Jamia University is that, the academics is great. The academic structure of Jamia is really sound. Everything else is a little, feeble. So I'm not really sure about their placement internship cell, because these central universities like these do not really focus on whether or not their students are getting jobs, because they make sure that the students are getting enough information about law so that they can go outside, obtain the license, and become lawyers. So the concept of corporate and internship and placement in legal firms hasn't registered with these central universities. I'm not sure about that. I mean, I haven't spoken with anybody who has recently passed Jamia. So that is something that you would have to figure out on your own. Okay.
Right, so this is what I recommend you for. This is what I recommend you to read: The Hindu or the Indian Express. Not just reading, you are not supposed to just read. You actually need to understand while reading. Okay, so you can change source if you get bored. Sometimes you can read the Hindu, sometimes you can read the Indian Express. The only thing that matters is the information and the practice that you get from reading newspapers. Yes, practicing a lot does help. Rashmi is absolutely right. National universities are good with placements because they were created keeping the corporate culture in mind. So they understand that it's not just the core legal courtroom practice that is a job opportunity for a person who has done law. There are multiple avenues that a person can go to after they have done law. Okay. आईएएस विजन के नोट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्लैट के लिए, ये बहुत ज्यादा है. इट्स जस्ट टू मच, जस्ट टू मच. ओके, न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक दो मैगजीन उठा लो, और मैगजीन में भी आई वुड सजेस्ट टेक क्लैट इग्नाइट, अ मैगजीन विच इज फॉर यू. So if you're going to take CLAT 24, then you can definitely go for CLAT Ignite. It is a good source, a magazine which is designed keeping you in mind. But if you are sitting for CLAT 23, you can take any compendium, Pratyogita Darpan you can take. Do not go for IAS vision notes. That's just too much. You'd get confused, bored, you'd stop reading current affairs altogether. Where can you avail mock test? Haven't found a reliable site. Preacher, I would suggest you go to BYJU'S. That's reliable enough. Okay. मैगजीन बाजार में मिल जाएगी. कैसे सवाल है ये? तुम क्या मतलब क्या what kind of a question is this? मैगजीन मार्केट, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा मतलब हाथ पैर चलाओ, हर चीज हर जगह मिल जाती है. ओके. GK today is amazing. Personal opinion, if you ask me, GK today is amazing. But that is also too much. So if you are starting right now for an exam that is 12 months away, GK today is good. But if you are starting right now for an exam which is just 2 months away, GK today is not achievable. आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे. और उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है, सभी कुछ रेलेवेंट लगता है. जब तुम उसे पढ़ोगे तुम्हें लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. कैसे करोगे कंसाइज? इसलिए कैसे सोर्स पे जाओ जिसे तुम बार बार रिवाइज कर सको. एक बहुत ज्यादा कंप्रिहेंसिव डिटेल्ड सोर्स तक नहीं जाना है. एक प्रिसाइज कंसाइज मटेरियल को ऑप्ट करना है और उस मटेरियल को बार 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 रिवाइज करना है. इस तरह से होगी आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी. ठीक है. हिंदू न्यूज़पेपर की कोई मैगजीन नहीं आती है. हिंदू न्यूज़पेपर है अपने आप में एक अखबार है. ठीक है. These are the things that you need to do. Learn, test, practice, right? They should not be done subsequently. They need to be done simultaneously. You need to learn, then you need to test yourself immediately. How do you test yourself? By practicing. After you have practiced, you need to understand what mistakes you made, identify the mistakes, try not to repeat them in future. That's how you increase your score. Okay. So आपका मेन फोकस एलेट पे हो तो जीके टुडे ही ठीक है. अगर आपका मेन फोकस एलेट पे है तो भी जीके टुडे ठीक नहीं है. ठीक है, तो भी जीके टुडे ठीक नहीं है. आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण annual compendium if you are focusing or inclined more towards ALET. I would suggest that you आप CLAT Ignite ले सकते हैं. You can go for CLAT Ignite, but it is a monthly magazine. So if you can complete all the monthly editions, good for you. Take them. मैगजीन से करंट अफेयर्स होता है ना मैगजीन में, तो करंट अफेयर्स का तो पूरा अपना सेक्शन है ना, क्वेश्चन तो आते ही है उसमें से. what do you have to take? You have to take a ball point pen. You can also take a pencil. ठीक है, along with an ID, your admit card. Water bottle is also allowed, I think. CLAT Ignite अगर तुम सारे मंथ का
कंप्लीट कर सकते हो तो क्लैट इग्नाइट ले लो, वो तो बेस्ट है। ठीक है। और अगर सारे मंथ का नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं बचा है, तो फिर प्रतियोगिता दर्पण का एनुअल कंपेंडियम ले लो, बस उसे ही लो, उसी को पढ़ते रहो, कम से कम 3 बार पढ़ लो एग्जाम से पहले, उसको पढ़ लिया करना। ठीक है, एनुअल कंपेंडियम। जी के टुडे के एमसीक्यू बिल्कुल कर लेने चाहिए, बिल्कुल कर लेने चाहिए, फंस जाते हैं उसमें से। एक्चुअली जीके टुडे को रेगुलरली अगर आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कर रहे हैं तो जीके टुडे बहुत अच्छा सोर्स है। जीके टुडे को क्लैट इग्नाइट के साथ मिला लो, उसमें न्यूज़पेपर ऐड कर लो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो नहीं सकता जो तुम्हें ना आता हो, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट हो। तुम करंट अफेयर्स में इतनी अच्छी एक्यूरेसी ले आओगे, बहुत अच्छी ले आओगे, लेकिन फिर वो बहुत पहले से शुरू करना पड़ता है। हाउ टू स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डोंट यू स्टार्ट विथ 11th-12th क्लास एनसीईआरटी political science, that start with that. After you are done with those two, पतली पतली है, बहुत मोटी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना, खुद से मत पढ़ना, सेशंस हैं यूट्यूब पे मेरे और सुरजीत सर के, try to understand what fundamental rights are, try to understand what basic structure is. This is all that you need for constitution, that's it. Filling OMR sheet, you can use pencil, no, you have to use a ball point to fill the OMR. How to make notes, notes तो बनाना, देखो जो तुम्हें समझ आता है, जो तुम्हें समझ आता है उसको अपने वर्ड्स में लिख लेना ही नोट्स होता है। Whatever you get or understand through reading or watching, you write it down in your own words and that is your notes. So same is done for everything, every theoretical subject, whether it is constitution or contracts, you do the same thing. Right, so are we done? Do you have more questions? We are sort of out of time. Right, so that's it for today, guys. I hope I was able to help you. Right, take care. I shall see you again tomorrow, hopefully. Till then, how many months are enough for current affairs? Ashwini, the safest bet is at least 12 months. But if you don't have that much time, minimum 8 months. 8 months minimum, maximum 12 months. एक साल का करंट अफेयर्स तो आपके कंपेंडियम में होना ही चाहिए। Right, so everybody, good night, take care. I shall see you again tomorrow. Till then, तब तक आप सब अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने जो भी कुछ सिखाया उसको ध्यान रख के उस पे अमल करेंगे। ठीक है, incorporate everything that I have told you, the strategies, the advices that I've given you in your preparation. Incorporate them, otherwise they're of no use. ठीक है, मैं अपने pearls of wisdom को यूं ही फैला देती हूँ और तुम उनको कलेक्ट ही नहीं करते तो उनका क्या फायदा। राइट, सो उन्हें कलेक्ट करो, उनका ब्यूटीफुल सा नेकलेस बनाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा क्लैट में। राइट, गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच, आई शैल सी यू अगेन, बाय बाय।